So I'm सर sharing. सर Yes, मैं एनसीईआरटी निकाल रहा हूँ. I have prepared few notes for you, and quite important they are. Then, if need be, I do have prepared some of the slides, and I would be sharing with you also. Uh, you all will be getting it after the class, right? Okay, sir. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Yes, Sir, Vijay. sir, there is a request that when you make some slides or notes and you will upload in app, sir, my request is that upload it before the class, sir, because we will get the note after 1 day. So today at this time we got the notes of tomorrow actually. Yes sir, it happens. Yes, sir, it happens. Yesterday's note you might have got. I have already asked the. Yes, Yes sir, sir, we Sir, got you today. we Yes, sir, got we it got today it sir. at this time. Yes, sir, at 6 we got those notes. Okay, and today's also you will be getting for sure. Yes, sir. Okay. Okay sir. Okay. 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 Indian Constitution. This is one of the important topic for NTSC point of view, right, students? Yes, And sir. yes, sir. Yes sir. yes, Betty. You know what it says? If we go by the meaning of this term, Constitution, it is a set of written rules, set of written rules according to which a country is governed. Is that clear? Yes, sir, clear, sir. Yes, sir. Now, basically it is the constitution through which you know we have a relationship among people in a particular territory, like we call them citizens and also the government, which means constitution is a way to determine the relationship between the people and the government. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. A Constitutional supreme design law. of class 9th. Clear now? Yes sir. Things that a constitution does to us. See, if a question comes, what is, read out the statements and, find out the correct one option that which is done to us by the constitution. So there are four functions which the constitution does to us as a human being, as a citizen of this country. That is, it generates trust and coordination, which is necessary for different kinds of people to live together. India is a land of diversity where people belonging to different sects, Yes, sir. different Diversity in Yes, India. castes sir. are living. And so, Yes, sir. until and unless we have this trust and coordination, we cannot survive altogether, right? And Yes, sir. that is why this constitution Yes, sir. was framed 70 years ago. It's very important document for us to live together. Then, second, it specifies how the government will be formed, and how government will be formed. There is a procedure which is followed, and we will be discussing today, after this all pages we have gone through. We would do that. There is a set procedure through which we elect the government, right? In the Yes, constitutional, sir. Elections. yeah, in the constitutional design we would, sorry, in the electoral politics we would be going through, and who will have power to take which decision. See, which decision has to be taken and who will be taking this decision. This is all decided by the Indian constitution itself, right? Clearly it specifies. Yes, Then sir. we have, who is doing this. See, students, you have to behave properly, you have to control your emotions. You don't know, you are at work juncture, and what should be your priority according to you have to control your emotions. This is my humble request to all of you. Is that clear? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Now, it is the constitution which puts limits on the powers of the government and tell us what the rights of the citizens are. See, we have certain rights and duties, right, children?
and there are some rights which are called as fundamental rights. However, other than the fundamental rights, certain rights are having with us constitutionally, but they are not fundamental ones. But yes, the limits on the powers of the government is put up by the constitution itself, so that it can create a welfare state for all of us. Now what does it mean when we talk of the welfare word? Welfare का मतलब होता है कि एक ऐसा सोसाइटी जहां पर सबको एक साथ रहने का मौका मिले, एंड सबकी बात सुनी जाए, एंड एवरीबडी गेट्स अपॉर्चुनिटीज ऑन इक्वल नोट, and this is all going on in India somehow. Then it expresses the aspirations of people about creating a good society, and how a good society is to be created. It is all specified in the constitution itself, following the directive principles of state policy, which are meant for the government. I'm writing here in Yes, sir. case. DPSP. Yes. Sir, they are not forced or mandatory for the government. Government can use them. Just like we have, yeah, just like we, it is mandatory for us to follow the fundamental rights. Yes, sir. It is mandatory. Yes, sir. Yeah, it is also mandatory for the government to follow those guidelines which are important for the Welfare of the country. yeah. Clear? Sir, Yes, beta. sir, can you please zoom little bit it? Yes, beta. Yes, beta. I can. I will. ये बता ना, अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. I think ये थोड़ा वो है ना, सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. It is clearly. Yes, visible. sir. Okay. Now, since when it became a practice, मतलब having a constitution with all the countries, or it is India, or which was the one who started this practice of having constitution for its country. So, France, yeah, France. after the War of Independence against 1714. Great Britain in class 8, you have already gone through America's war against Britain. That is the 13 story of 13 colonies. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. French helped the sir. Yes, sir. French helped the American colonies. Yes. It was French, which helped America to get its independence against the Britain. Yes, sir. Here, so after the war against Britain, Americans gave themselves a constitution. But after the revolution, that is the French Revolution, the French people approved a democratic constitution, and then after it became a regular practice almost in all democracies to have a written constitution. So this is important, children. This is one of the important parts. Clear? Now, Yes, sir. come to the India. See, constitution which became a practice after the French Revolution in India, it was also the, a journey which was followed by some of the Indians. However, that time India was a colony for the British, but yes, there were few people who took initiative regarding making of the Indian Constitution. And if we go by the history of this making of this Constitution, we find in 1928 the very first step which was taken by the Nehru Committee. We call it Nehru Sir, Committee. Motilal Nehru. Yeah, having 9 members altogether. Mr. Motilal Nehru, the father of Jawaharlal Nehru, Jawaharlal Nehru. right? And 8 other Congress leaders drafted a constitution for the country. However, it was not sanctioned by the British, but yes, it was the first initiative which was taken by the Indians. And then in 1931, having a Karachi session in Pakistan of the Indian National Congress,
which dwelt how the independent India's constitution should look like. मतलब भारत में अगर हम in case if we get independence in near future, that time it was, I mean, a draft was prepared in Karachi session also, that इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए. And so for this point of view, in both these documents, what we had is highlighted here. It is universal adult franchise, then right to freedom and equality, and Fundamental right. also the rights of the minority. Is that clear? So Yes, sir. these were the three provisions which were included in both these documents. Other than this, now the Constituent Assembly. See, students, the assembly which drafted the Constitution of India, having elected members called representative, people's representative, and this organization which drafted the Indian Constitution, or this assembly, was came to be known as Constituent Constituent Assembly. Assembly. Right? Under the Cabinet Mission Plan, which came in India in 1946, elections were proposed for the Constituent Assembly, and accordingly, these elections were held in July 1946. And the members of the Constituent Assembly were elected. Clear? I will clear how many members were elected. 299. 89. 299. Look at this. सर वो 389, sir. 93 from, yes, sir, 93 from the provinces. सर पार्टीशन के बाद 299 हो गया इंडिया. Yes, yes. Okay, you are right. The first meeting of the Constituent Assembly held in December 1946, but I am giving you the date also. It was 9th of December 1946 when the first meeting of the Constituent Assembly was held. Right? And Dr. Rajendra Prasad became President of India. चेयरमैन. बेटे यहाँ पर ना चेयरमैन भी दिया हुआ है वर्ड और प्रेसिडेंट भी, तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. यहाँ पर प्रेसिडेंट का मतलब यही है कि द हाईएस्ट चेयरपर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली. इट वाज द चेयरमैन और द प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड देन बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट. Chairman of drafting committee of the. So please do not get confused here. Clear? Yes, sir. Sir, Dr. Sajidan Sinha was the interim president of the Constituent Assembly. Okay. Now, this assembly had 389 members in all, but after independence in 1947, country was divided. You all know. Yes, India sir. and Pakistan became two countries, and so the members of this Constituent Assembly were also divided accordingly between the two countries. And for this point of view, the Constituent Assembly, which wrote the Constitution of India, had 299 members that one of you have spoken, or a few of you have spoken. Clear? While the Constituent Assembly that wrote the Constitution of Pakistan had 90 members. So in all there were 389. But I have to check. This fact I came to know through the media, that out of these 292, you may also check. ऐसा माना गया कि these many members, but I have to check. I'm not confirm about it. But yes, somewhere I have read it. Somewhere recently I have got to know on 26th of November only through media that these many members have put up their signature. Yes, sir. So what about others? What about the 7? Why they have not signed? मे बी उनका बर्थडे हो सकता है, वो बीमार हो सकते हैं, वो नहीं आ सकते हैं. आई मीन रीजन आई डू नॉट नो बेटे.
Clear? So this I have to check. Now, the assembly adopted the constitution on, you all know, 26th November But 1940, right? Constitution Day of India. Yeah, but it was implemented on 26th January 1950. Now here, very important thing. Why, in spite of the fact that, on 26th of November 1949, if the constitution was adopted, why it was enacted on 26th January only? Sir, because on Sir, 26 because January, on sir, we have because sir on 1929 December 1929 at the Congress session, Jawaharlal Nehru proclaimed that 26 January 1930 to be proclaimed as the Purna Swaraj Day. The Independence Day of India. yes, sir, and they have roasted the flag of India as well. Okay. Is there anyone who can clarify it or Sir, something can be added to it? Jawaharlal Nehru also had another reason which I can't remember, sir, exactly. Okay. But I was told by SST by my school SST teacher in class 8. But I बिल्कुल. नहीं नहीं सर, आपने. उन्होंने मोतीलाल नेहरू से रिलेटेड कोई पॉइंट बताया था कि उनके फादर, ओके. वो मुझे याद नहीं आ रहा सर. ओके. Sir, यस बेटी. sir, I took other my teacher has said that on that day the meeting was organized with the British as well as with the national leaders, and on which day the leaders said that the British said that to leaders that we will only rule only and only if we take the initial or the external decisions of the India, and after that meeting, Indian nationalists came and they do not say that we will not take this type of independence. So sir, this meeting was also held on 26 January. That's why they have done this 26 January as our Independence Day. Sir, I got this theory from another ओके. teacher. ओके. ओके. नाउ कैन आई स्पीक समथिंग? Yes, sir. ओके. प्लीज लिसन मी केयरफुली. और ये आप कहीं से भी चेक कर लेना. ठीक है. मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इसमें. बाकी आप लोग जो बोल रहे हो कहीं कहीं आपको ठीक मिली है इंफॉर्मेशन, लेकिन बिल्कुल टू द पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ. 30 and 31st of December 1929, on the coast of river Ravi or bank of river Ravi in Lahore, in 1929, there held a session of INC under the presidentship of Pandit Jawaharlal Nehru, and it was a historical session of Congress in which three important decisions were taken. The one, the goal of Swaraj, the goal of Congress, which was Swaraj, now it was adopted as Pool Swaraj. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Second decision. Second decision which was taken in this Congress session was that every year India will celebrate its Independence Day. However, India was not independent one, but yes, it was decided that every year India will celebrate its Independence Day in the country. Third decision. Under the leadership of Mahatma Gandhi, to realize the goal of Pool Swaraj, a mass movement would be launched, and that was civil disobedience. Civil disobedience movement. Clear है ये three decisions? सर Yes, सिविल sir. डिसोबीडियंस वाला क्या था एक बार दोबारा अब सुनो, अब सुनो बेटे, ये आपका जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, Nationalism in India. वहां पर आप ये पढ़ोगे, ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का. वाई Lahore session is famous, or why it is known as historical one, or what three important historical decisions were taken in the Lahore session of Congress in 1929. So this is the answer. But here associated with this 26 January 1950, as per the Lahore session,
in which the decision of celebrating Independence Day every year was taken. As per this decision, the very first year in 1930, on 26th of January, the first Independence Day was observed by India, by Indians. And then every year on this day only, the country was celebrating its Independence Day, except few years of Second World War. Until India got its independence in 1947, it was going on. But since India has got its independence on 15th of August 1947, then Independence Day was transferred to 15th of August, obviously. And then keeping the importance of this day, or to mark the importance of this day, Indian Constitution, which was adopted by the Constituent Assembly on 26th of November 1949, was enacted on this particular day, making India a republic. And so every year, the country is hosting its Republic Day on this particular day. Is it clear to everybody now? Yes, sir. It is clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Now, if you know the Constituent Assembly, which met for 114 days. आपको किसी किसी बुक में मैंने देखा है बेटे 166 डेज भी दिया हुआ था किसी बुक में, कोई उपकार पब्लिकेशन है, उस बुक में 166 डेज, मुझे नहीं पता कि आई डू नॉट रिलाई इवन ऑन द प्राइवेट पब्लिशर्स. So here I am following the NCERT data. Here, because NCERT is the reliable body working Yes, for sir. national level, particularly in the field of education. So even UPSC also accept the facts given by the NCERT itself. So here 114 days spread over almost 3 years had the meeting of the members of the Constituent Assembly. मतलब पूरे 3 साल में 114 times they had their meeting and then they drafted this constitution. During this time, around 2000 amendments were considered. Amendments का मतलब होता है changes to the constitution which was drafted by this Constituent Assembly. So every document presented in the Constituent Assembly, every word spoken in the Constituent Assembly was recorded and preserved for the record to be used in future, called as Constituent Assembly debates. अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. Yes, sir. सर तो ये जो है फर्दर रिकॉर्ड के लिए उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ था डिबेट. Still it is there with Indians. Why? Because in any case related to the interpretation of the Indian Constitution can be required, related to any of the case, maybe the disputes between the state and the central government, and that is why Yes, sir. it has been preserved as a future document. And when printed, these debates are 12 bulky volumes of books and are used to interpret the meaning of the Constitution. And आपको पता होना चाहिए बच्चों, the Supreme Court of India is having the judicial review, right to review the Indian Constitution, and not even the Parliament. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Judicial review. Sir, it can declare any law null and void if it violates the fundamental law and constitutional Fundamental rights of the citizens. Yes, sir. Fundamental right, or even the fundamental structure of the Indian Constitution. Yes, sir. Which is based on liberty, secularity, and equality. Yes. आप अच्छे Sir. बच्चे, आप स्मार्ट बच्चे. गुड. सर यस बेटे. सर अमेंडमेंट हुए थे सर, वो कितने ईयर्स में हुए थे अमेंडमेंट सारे? क्या पूछा आपने बेटा, रिपीट करोगे? कितने साल लगे?
ऐसे कितने साल लगे उसे? अरे टोटल लिखा तो है, 2 साल 11 महीने, आई मीन 2 years 11 months and 80 days. तो अमेंडमेंट थे वाले 2000 अमेंडमेंट्स। During this period only it was done. ओके, समझ इसी के अंदर हुए थे। Yes, yes, yes. See, there were many representatives from south, from east, from west, from central India, from north India. I mean, uh, all the chieftains, we should call chieftains of particular community or tribal group, or I mean those who were literate that time, they were representing in the Indian, I mean in the Constituent Assembly, and how these chieftains were having the verdicts regarding any of the issue that they come across. तो उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए और उनकी जो बातें थी वो रिकॉर्ड हुई, प्रिजर्व हुई, फिर उनको पढ़ा गया, एंड देन अकॉर्डिंगली जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, इफ इट वाज फाउंड दैट दीज आर ऑथेंटिक एंड कैन बी used for the entire India as a community. Sir, Yes, bete. sir, sir, I have a doubt that when our country was independent, our country was independent in many of the princely states. There were many of the princely states. So, sir, after our constitution was drafted before the independence, and sir, after the independence, there were many of the princely states which were included in India. So, sir, there would be a conflict because other provinces will also give their interest, have their interest in the Yes, the constitution. JNK conflict was the most famous conflict in which Hari Singh refused to join Pakistan and India and stated his Jammu and Kashmir as a Kashmir as a independent state first. राइट, हाँ जूनागढ़ था इंडिया में और हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर। Sir, actually, my question is different, sir, from the explanation of this student. Sir, my question was, sir, after the independence, there would be many conflicts about the constitution, and because many of the princely states were adopted at that time. तो सर मतलब हमारी कंट्री की आज़ादी के बाद सर बहुत सारे disputes और so many amendment would be done. देखो, आपका क्वेश्चन वैसे मुझे बिल्कुल क्लियर हुआ नहीं। आपका कुछ ये है कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स तो इंडिपेंडेंट ही थे, आप ये कह रहे हो ना? फिर उनको Yes, अडोप्ट, sir. तो उन्होंने उसको कैसे अडोप्ट कर लिया, ये सब कह रहे हो? सी नो मैं सर, और फिर उसके बाद प्रिंसली स्टेट का कोई इंटरेस्ट तो था नहीं सर कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही, और फिर नहीं उनका इंटरेस्ट आ गया. नहीं बेटे सुनो, मैं बताता हूँ आपको। वैसे तो देखो उनका इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर भी जैसे आपको पता है बी आर अम्बेडकर बड़ौदा, बड़ोदरा, बड़ोदरा बी से ही था वो नाम। वल्लभ भाई पटेल. नो 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 नो, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ बी आर अम्बेडकर ओनली। ये राजा थे बड़ौदा के, बड़ौदा के राजा थे, यस, प्रिंस ऑफ बड़ौदा, या सर वडोदरा। बड़ोदरा और बड़ौदा, या यही थे जिन्होंने उनको स्कॉलरशिप देकर इंग्लैंड में हायर स्टडी के लिए भेजा था, एंड पर्टिकुलरली सर बड़ोड़ा था या राइट। तो सर, इस पे केबीसी पे एक क्वेश्चन भी था। हाँ हाँ नवाब थे, या बड़ौदा के नवाब थे जिन्होंने भेजा था हमें। तो सुनो, ये ये उनके लीगल एडवाइजर थे वहां पर कोर्ट में, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव सभी के यहाँ पर होते थे, सभी के। जैसे ग्वालियर के फैमिली में मेरे मेरे मैं खुद बता रहा हूँ, वन ऑफ माय ग्रैंडफादर कजन ब्रदर वाज आल्सो देयर, राइट। और वो मल्टी टैलेंटेड लोग होते थे, बहुत उनको सारी लैंग्वेजेस आती थी, और पर्टिकुलरली इंग्लिश, दे वर एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश, क्योंकि ब्रिटिश लोग उनको फरमान देते रहते थे ना आए दिन, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए। तो Yes, sir. तो इसलिए उन्होंने उस टाइम पर जब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये सब डिबेट चल रहा था ना कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, तो उस टाइम पर उनके रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट से भी रिप्रेजेंटेटिव थे। बट ये अलग बात है कि बाद में जो 563 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, दोज हु वर लेफ्ट ऑन देयर मर्सी बाय द ब्रिटिश टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया और टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट, वो उनकी अपना एक पॉलिसी थी। बट यस, मोस्ट ऑफ देम ज्वाइंड इंडिया बाय आई मीन देयर ओन विल एंड विश, एक्सेप्ट 4 और 5।
Okay, Junagadh, sir. Understood. Jammu and Kashmir, Hyderabad. And they accepted the Indian constitution. They had no problem at all. But yes, few of them by force, by Sardar Patel, were, Yes, Hyderabad. yeah, yeah. Sir, And they, Junagadh, sir, because they did not wanted to sacrifice their wealth to ये Indian government. उनको ये था ना कि देखो बेटे, अगर कोई अपने, सपोज करो आप में से कोई भी एक राजा है किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के, तो आप क्यों, वाई डू यू एक्सपेक्ट कि मुझे कोई गद्दी से उतारे और मतलब No, मेरा sir. खत्म हो? कोई नहीं चाहेगा ऑब्वियसली। Yes, sir. Then Vallabhbhai Patel, at the time he was the current home minister, and he Yes, sent the whole force to that Hyderabad. yes. So I hope, I mean, the one who asked the question is satisfied. Yes, sir. Okay. So should we go ahead? Yes, sir. We can proceed. Yes, Okay, sir. okay. So these Constituent Assembly debates are the 12 bulky volumes of printed book and used for the interpretation of the Indian Constitution by the Indian judiciary as and when it is required. Now, preamble to the Indian Constitution. It's an introductory part. What it is, if any question can come, तो आपको समझना चाहिए. It is an introductory part which includes the aims and guidelines or the guiding values of the Indian Constitution. Right, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, the original constitution, ये important point है यहाँ पर. The constitution had 395 articles, 8 schedules, and 22 parts. I mean, the entire Indian constitution has been divided into all these. But now it has been changed to 448 articles, 25 parts, 12 schedules. राइट right? अगर आप देखो, वैसे गूगल को आई डोंट फाइंड ऑथेंटिक, क्योंकि वहां पर कोई भी चेंज कर सकता है. अभी 24 पार्ट्स जी न्यूज ने डीएनए में उन्होंने बताया था, रेस्ट इज ओके, बट उन्होंने 24 पार्ट्स वहां पर बताए हैं. बट आई एम टेकिंग हियर एनसीईआरटी डेटा. So this makes it one of the lengthiest constitution in the world. Indian constitution is the Yes, lengthiest sir. one. और सबसे छोटा किसका है पता है आपको? Sir, यूएसए. America's. Sir, Yes. 7 to 8 articles are only mentioned in USA article. So USA is having the smallest constitution in the world. India is having the Bulkiest. Largest country. largest one. Because USA has made its system very more liberal and rational, and it has minimum rules and regulations. Yes. इंडिया में देखो बेटे, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स ए लिविंग डॉक्यूमेंट. व्हाई इट्स ए लिविंग डॉक्यूमेंट? बिकॉज as per the needs and requirements, changes can be brought to it, can be made to it. Yes, sir. Amendments. Amendments. Flexible. Yes. And अभी 104th amendment अभी हुआ recently, पता है आपको? Yes, sir. We'll discuss it here. Very important it is. Very important and knowledgeable. I have quoted. The structure of the Indian Constitution is based on the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. बेटे ये आपको याद रखना है कि आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, टोटली इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चर विच वी हैड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Rigidity of the Indian Constitution, written constitution, bicameral legislature, independent judiciary, division of powers between center and the state governments, and supremacy of the constitution makes India a federal country. ये आपको पता होना चाहिए. See, constitutionally if you go by, no such term, federal term, is used in the Indian Constitution. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फेडरलिज्म वर्ड का यूज नहीं हुआ है. बट यस, since it is based on the principle of federalism, and here some of the provisions written here also are inclined towards federalism, and so all these provisions make India a federal country. जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ये इंडिया का एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है. इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसके जैसे पार्लियामेंट की अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे, तो इट हैज 2 हाउसेस. लाइकवाइज स्टेट्स की जितनी भी हमारी असेंबलीज हैं, दे आल्सो हैव मोस्टली 2 हाउसेस.
So this bicameral legislature, independent Sir, judiciary, yes बेटे, sir, you said state had two houses. नहीं सभी में नहीं है बेटे, not in all. Sir, two houses means they have to only one legislative assembly, na sir? Legislature and council, So it means council, that there are two, but सभी council में, and assembly. yeah, but सभी में नहीं है बेटे. So sir, what are their different functions? बिल्कुल देखो वो वैसी होती है जो काउंसिल्स है ना, वो वैसी होती है जैसे हमारी राज्यसभा के बारे में हार्डली कोई पावर इतनी है नहीं, और हम कोई काम सुनते भी नहीं है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली नॉट एसोसिएटेड विद द पीपल. Yes, sir, they are elected from the Lok Sabha. इसलिए जो जनरल वर्क है ना स्टेट्स में भी वो असेंबली ही करती है, एंड असेंबली वर्क्स लाइक द लोकसभा. Okay, sir. देन so what India is declared as in the constitution? India has been declared as the union of states based on the principle of federalism. Is that clear? Article 1. Yes, Vivek. But sir, federalism word is not used. No, no, nowhere. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका यूज नहीं हुआ है. Yes, sir, कॉन्स्टिट्यूशन Union of India's Union of States is the line of Article 1. या इंडिया इज द यूनियन. आप फेडरलिज्म चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं फेडरलिज्म. Yes, sir. Yes, पढ़ा है. Yes, sir. The Yes, sir. Constitution of India originally gives India two sets of government. That is central government. We call it union government also. Also the national government, मतलब meant for the entire country, government for the entire country. While we have state governments also headed by CMs in the states. Later, a third level of government was added to in the form of panchayats and municipalities in अरे the कौन सी में ऐड हुई थी? 1990. 1995. No. I think Balwant Rai Mehta report 56 or 57. But 1993 onward उसको ना मैंडेटरी इलेक्शन कर दिया गया था इंडिया के अंदर इनके लिए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Mandatory. उससे पहले वो एग्जिस्टेड थी since 1957 if I am not wrong. Yes, sir, Gandhiji promoted the panchayats. It was Balwant Rai Mehta report which came, and then first time I think in Rajasthan it was adopted or matlab practiced trial sir. basis. Sir, in 1992, sir, Indian government passed a bill in the parliament, which was the 73rd Constitutional Amendment Act, and in its part 9, it was stated that it was mandatory to hold election after every 5 years at the local level. Yes, ये तो मैं बहुत पहले बोल रहा हूँ आपको कि वो Yes, मैंडेटरी sir. किया था. पहले Yes, इलेक्शन sir, it was mandation and previously elections also done. So it was implemented in 1993. प्रीवियसली इलेक्शंस कभी होते थे, कहीं पर होते थे, कहीं पर नहीं होते थे. जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में 1984 के बाद कभी भी इलेक्शन हुए नहीं. राइट, दिल्ली में 1984 लास्ट इलेक्शन हुए थे, और उसके बाद वो खत्म कर दिया था यहाँ से सिस्टम को, पंचायती सिस्टम एंड ऑल. नाउ वी हैव म्युनिसिपैलिटी सिंस 1993. Okay, sir. जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंसलर्स बोलते हैं ना, काउंसलर्स. Yes, sir. और उनके Yes, sir. जो हेड होते हैं उसे मेयर कहते हैं. और जिस पर्टिकुलर एरिया से वो इलेक्ट होते हैं उसको हम वार्ड्स बोलते हैं. Sir, wards. These are Ward. very small constituencies. These are Sir, in villages it is called as tehsil. villages. हाँ बेटे, वो डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट होता है, सी स्टेट इज डिवाइडेड अमंग डिस्ट्रिक्ट्स, एंड डिस्ट्रिक्ट्स आर डिवाइडेड अमंग तहसील्स, एंड तहसील्स आर डिवाइडेड अमंग ब्लॉक्स, एंड ब्लॉक्स आर डिवाइडेड अमंग विलेजेस. Villages. Yes. Clear? Yes, sir. Okay. So this third tier of government was added in the form of panchayats and municipalities, which is called the third level of government. For this point of view, India is having two or more levels of government, which makes it again a federal country. Federal country. Yeah. So if you look at the division of power between the state and the central government, we find three fundamental lists. That is union list, the state list, and the concurrent list. Union Concurrent list is having 97 subjects of national importance, and Yes, central sir. government.
can make laws on these subjects. Sir, We have about the union list and state list, sir, NTSC asked the question in Delhi stage 1. yes, सर चेंज नहीं हो गया सर 100 हो गया ना तो यूनियन लिस्ट के अंदर तो Yes, sir. 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स आ गए थे, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स ऐड हुए थे। स्टेट लिस्ट में से 5 सब्जेक्ट हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए थे। ये तो 61 हो गए थे स्टेट लिस्ट में ओके। अब आपने इनकी ना ये एग्जांपल जो एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हुए हैं, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है बेटे। बेटे 1 मिनट प्लीज। यस प्लीज। It has 97 subjects of national importance, say for example defense of the country, foreign affairs and banking, even currency and communication also. However, there are many other subjects, but here in the NCERT book at your level are only these subjects which have been given in your book. Why are you calling again and again? Hello, shut up! Don't call me again. Yes. It's state list. It had 66 subjects. Am I audible, students? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. Okay. It has 66 subjects of day-to-day importance meant for the state only, right? And state government has right to make laws on these subjects. And trade, commerce, agriculture, police, and irrigation. These are the subjects which are given in the state list. Then we have concurrent list. It has 47 subjects of common concerns for both level of government, that is for union government and state government as well. And both level of government can make laws on these subjects. For example, marriage, divorce, education, forests, adoption, succession, trade union are the examples which are meant for these lists. But in case, सर देखो अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है जिसपे आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यस बेटे, कोई डाउट था? बोलो बोलो। सर ट्रेड में सर ट्रेड यूनियन में सर डिफरेंस क्या है सर ट्रेड में और ट्रेड यूनियन में ट्रेड यूनियन और ट्रेड में और ट्रेड में क्या फर्क है? देखो मैं बताता हूँ, जैसे एक स्टूडेंट में और स्टूडेंट यूनियन में क्या फर्क होता है, ऐसे ही एक क्लास में अ ट्रेड यूनियन इज फॉर्म बाय दिस Traders. businessmen. no, anyone can form, you even can form a trade union. Yes, sir. Farmers union can be, see, trade union means an association. ओके सर A Soviet, जिसको हम बोलते हैं ना सोवियत, a union, association, और Workers union in जनरली Russia. ट्रेड यूनियन में संगठन कोई भी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, मे बी Yes, लॉयर, sir. मे बी बार्बर, मे बी बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, कोई भी हो Yes, sir. Doctor union. yes, all are trade unions, right? There are many trade unions. If their laws conflict, अब मैंने आपने पढ़ा था ना कि दोनों ही गवर्नमेंट को राइट होता है कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे यस सर लॉ बनाने का, बट इन केस इफ देयर इज अ डिस्प्यूट, then upper hand would be of the central government, which means Central government. a law which is made by the central government would be applicable, implemented, enacted. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. यस सर Then come residuary subjects, और इस बार मैं आपको बता दूं, इस बार का जो सैंपल पेपर है दिल्ली के लिए, उसमें इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। अगर आपने देखा हो, इफ यू हैव गॉन बाय दिस,
It is यस there. सर, ये हमारी मैम ने पूछा था। Have you gone through that? तो सर मैम ने पूछा था क्वेश्चन और बताया था कि सेंट्रल पेपर में दे रखा है, पिछले साल भी आ रहा था। ओके ओके ओके, हाँ हो सकता है, मैंने भी कहीं पढ़ा है, बट ये है वो क्वेश्चन वहाँ पर। रेजिडरी सब्जेक्ट्स मीन्स द सब्जेक्ट्स विच have not been included in any of the three lists above are known as residuary subjects. Central government can make laws on these subjects, and for example, internet, computer software, and many other subjects which have emerged after independence. क्योंकि union list, concurrent list or state list were included at the time of framing of the constitution itself, right? But there are many subjects which were not there at that time, and now they are the part of this residuary subjects list. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, Yes, Vijay. there was the section of residuary list only, not including the subjects, was in the constitution, or when we got to know about IT and then we have included the residuary list in our constitution as the amendment. Uh, hmm. I think ये मैं I cannot give any comment because it's not even clear to me. I haven't thought of this. Will clarify. Will clarify to you. Okay, sir. क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है थ्रू अमेंडमेंट्स ओनली इट हैज बीन एडेड लेटर बिकॉज उस टाइम पे तो ये था ही नहीं ये सब्जेक्ट। यू गॉट माय पॉइंट? मुझे तो अंडरस्टूड लग रहा है Yes, कि sir. इट हैज बीन एडेड थ्रू द अमेंडमेंट्स बिल ओनली, Okay, sir. राइट बेटे? नाउ the union and the state government, sorry, all the states in the Indian Union do not have identical powers, which means equal power nahi hai, because India has been formed by holding together route, and holding together route, अगर आपने फेडरलिज्म पढ़ा है वो चैप्टर जिसमें there are two routes to form a federation, Federation, Coming USA, Spain, together, that is coming holding together, Australia. Coming together federation. yeah, holding together federation and together. Coming together. Coming together coming together federation. federation. Clear है? So Yes, what sir. happens in holding together federation? The central government is more powerful than its constituent units in a country. Some parts are given special status also to keep them with the organization. So, Yes, for example, the northeast states are given and Pakistan For in our history. example, yes. So that is why it is said that in the Indian Union, or we do not have the identical powers. Say, for example, the union and the state governments have the power to levy the taxes or impose taxes to carry on their administration and responsibilities. But in case of any dispute about the powers between the two levels of government, that is central government and state government, I'm talking of, the high courts and the Supreme Court make a decision. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. सर हम इसलिए बोलते हैं ना सर, इंडिया प्योरली फेडरल नहीं है क्योंकि सर मतलब सभी स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं है। हाँ बेटे, हम सेंट्रल इसलिए और बोलते हैं स्टेट कि प्योरली गवर्नमेंट के फेडरल लिए नहीं है। पावर नहीं है, लेकिन देखो अभी जैसे एक सब्जेक्ट है एजुकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और दिल्ली गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट। वैसे तो अगर आप इसके यूनियन लिस्ट के या सॉरी ये जो लिस्ट है अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो एजुकेशन जो है वो सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट, कॉन्करेंट। है ना? बट सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में क्योंकि पूरे इंडिया में ही होती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे सीबीएसई बोर्ड है वो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, क्लियर है? लेकिन दिल्ली में गवर्नमेंट किसकी है, इसका भी असर पड़ता है। तो इस ऐसे केस में अगर दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में या स्टेट गवर्नमेंट और दिल्ली सॉरी नेशनल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है किसी बात को लेकर, तो उस टाइम पर इंडिया में हमेशा ही अपर हैंड सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाता है। इसलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो इंडियन यूनियन है उसमें जो इंक्लिनेशन है पावर्स का टुवर्ड सेंटर है, जैसे अभी देखो थोड़ा सा few seconds I'll take. यूनियन लिस्ट आपको पता है 97 सब्जेक्ट्स हैं, 66 सब्जेक्ट्स 47। कौन पावरफुल है? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर पूरे राइट्स हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ भी राइट है इक्वल, बट इन केस ऑफ डिस्प्यूट अपर हैंड वुड बी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. इन केस ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री, 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी होती है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स यस ऑटोमेटिकली सर. कम अंडर द सर सेंट्रल. फाइनेंशियल सर नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो इस तरह से जो पूरा पावर का इंक्लिनेशन है वो किस तरफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ. एंड रेजुलरी सब्जेक्ट्स आर ऑटोमेटिकली हैंडल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ. क्लियर है? सर हाँ बेटे. सर जैसे नेशनल असेंबली प्रेसिडेंट, इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है सर वो डिक्लेयर करता है, तो सर ऐसी स्टेट इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है? गवर्नर. गवर्नर. ओके सर. सर हम कहते नहीं कि सर इंडिया प्योरली फेडरल नहीं है क्योंकि सर उसके सभी स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं है. इसको सर इंडिया को सर प्योरली फेडरल नहीं कहते ना इसलिए. हाँ देखो, अरे देखो बेटे, अभी यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है. जैसे आप इंडिया में, आपको पता है इंडिया इज डिवाइडेड अमंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. Yes, sir. 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. आप ध्यान से सुन रहे हो ना मुझे? Yes, sir. यस sir. सर. अब 9 यूनियन टेरिटरीज और 7 यूनियन टेरिटरीज मत बोलना, ठीक है? Yes, इट्स sir. 8 यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि दादर, नागर हवेली, दमन एंड दीव सर मर्ज हो गए वो. हैव मर्ज्ड. यस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटे? नाउ for this point of view, the union territories like Chandigarh, Delhi, and Lakshadweep. यहाँ पर I have given the example of Delhi itself. The Delhi is known as NCT, that is National Capital Territory of Delhi, and it has a special status called NCT. Then Assembly it has, and a Council of Ministers it has headed by CM, and we have Lieutenant Governor as the administrative head also. So for this point of view, Delhi is having special powers, while some other union territories are so small that they cannot be included in the merge in any of the existing, Legislative assembly is not there. and nor they can be left independent one. And so they have been ruled over by the गवर्नमेंट. yeah, central government, or Governors. yeah, maybe governors, maybe commissioners somewhere like Puducherry and all. So article here, article आपको ये पता होना चाहिए, article 370 which was giving the special status to Jammu and Kashmir now has been scrapped off, and I think 3rd or 5th of August से effective हुआ था. आप देख लेना इसको, 5th of August in case अगर डेट. That is also removed, na? Yeah, it has been removed, which means स्पेशल स्टेटस अब वहाँ का खत्म कर दिया गया है. देन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, तो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन इट्स ओन. मतलब अगर दोनों गवर्नमेंट ये चाहें कि जो भी अरेंजमेंट है, म्यूचुअल शेयर है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, अगर उसमें कोई चेंज करना चाहे तो दे कांट, बिकॉज पार्लियामेंट डजंट अलाउ दिस. And any change to it has to be passed first by both the houses of the parliament with 2/3 majority, and then it has to be ratified or passed by the legislatures of at least half of its total states. मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, वहां की हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, मतलब 28 में से 14 कम से कम विद हाफ, मतलब उसको पास कर दे, रेटिफाई कर दे, तो ही कोई बात यहाँ पर मानी जाएगी, इंप्लीमेंट होगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी. इसका मतलब ये है कि इंडिया में स्टेट्स को भी थोड़ा सा तो रिलैक्सेशन दिया हुआ है एज फार एज एंजॉयमेंट ऑफ देयर पावर्स आर कंसर्न. देन सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर कुछ जो आपकी बुक में है एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, आई हैव इंक्लूडेड दोज ओनली, अदरवाइज देर आर around 40 countries, maybe more, of which constitution was studied by the constitution framers, right? But France, what we have adopted from France, the 3 ideals of the French Revolution, that is fraternity, Fraternity, liberty. And equality. ब्रिटेन से we have taken the parliamentary form of government. And मैं आपको बता दूं, for your kind information, British Parliament is considered as the mother of all parliamentary system in the world. Yes, sir. Then USA, from the Bill of Rights, we have taken the fundamental rights. Russia, from the Russian Revolution, we have taken the socialist, we have taken the social and economic equality. Is that clear? Yes, sir. 5-year plan we have Yes, also sir. taken from Russia. Humor model. And these two terms
socialist. This was added to the in the Yes, sir, by original. the amendment. या इन 1976 में 42nd अमेंडमेंट्स के द्वारा उसको जोड़ा गया था एंड सेकुलर टर्म को भी अर्लियर हाउएवर दे वर नॉट Sir, can you repeat the date? socialist and secular by Mrs. Indira Gandhi it was added now. India has a parliamentary form of government. As I have told you, it has been adopted from the Britain, and Parliament is supreme in our country, and so enjoys power on behalf of the people as a whole. It consists of two houses: Lok Sabha, House of the People, it is called, and also the lower house, Yes, sir. Rajya Sabha, the Council of States. It is known as the permanent house and upper house also. The President of India is also considered as the part of the Indian Parliament. However, he is not a member of any of the house, but yes, without his assent to any of the bill cannot be Without his signature. clear. So that is why his signature or her signature are mandatory for any of the bill, any of the resolution to make it a bill, to make it a law. Now, if we talk of the two houses of the parliament, see, अब यहाँ पर एक अब हो सकता है आपको ये सारा पता होगा. Current status, current membership, we have 543, and Excuse me, sir. yes, it is. Sir, but the actual number is 545. Two members are the Anglo-Indian members that are elected by the Yes, sir, president. yes, sir, which are appointed by the president. ये देखो Okay, sir. Yes, sir. got Sir, it? sir, out of 543, also one member is elected by presidents. These are elected by the people, and these two are nominated by the President of India from Anglo-Indian community. क्लियर है बेटे? अभी Yes, sir, clear. इलेक्टेड ही है बेटे. ये 543 प्लस 2 45 हो जाएगा. यहाँ पर ये प्लस 12 भी है इसमें. अभी देखो क्लैरिफाई करता हूँ मैं आपको नीचे. ये सर राज्यसभा में 12 है सर, और जैसे कि साइंस आ जाते हैं, और Please सर go लिटरेचर के कुछ आ जाते हैं. ये प्लीज गो थ्रू दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटी पॉइंट ऑफ व्यू. The maximum strength of Lok Sabha as per the Constitution of India is 552, including two additional members of the Anglo-Indian community, nominated by the President of India on the advice of the Government of India. Now, this has abolished in January 2020 by 104th Constitutional Amendment Act 2009. दिसंबर में जो सेशन आता है कांग्रेस का, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर रवि शंकर प्रसाद, वन ऑफ द रिनाउंड lawyer of India of BJP, who cited the reason that the number of Anglo-Indian community in India is just 296. I mean total population as per the census 2011. So there is no need of nominating these two. And now, वैसे भी मैं आपको बता दूं, the capacity of the Lok Sabha is 550. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir, 5 are, yes, sir, others are elected by the scientist. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. Sir, so फिर at the current status there is no election, there is no nomination of Anglo-Indians. एंग्लो इंडियन के इलेक्शन कभी भी नहीं होते हैं. दे आर जस्ट नॉमिनेटेड बाय द. Yes, sir, nomination. नॉमिनेशन अब नहीं होगा. Sir, what do you mean by Anglo-Indian community? जैसे आप वो पढ़ते हो ना बायो में, ब्रीडिंग क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग. Yes, sir. Yes, So there are breeds of, yes, sir, there are breeds of Yes, Europeans and others. maybe mother or one of the parent is English and one of them is Indian. Yes, sir. Ruskin bond is the example of Anglo-Indian. या Okay, sir. तो मनी बिल की अगर हम बात करें, इट इज राज्यसभा हैविंग जस्ट no power on the money bill, and nor it can be introduced in the Rajya Sabha. It can only be introduced in the Lok Sabha. आपको पता होना चाहिए. It can just hold this bill for 14 days, and after which it is supposed to be passed, मतलब deemed to be passed, it is automatically. Clear है? Rest is, I think you all are aware to it. Current आपको पता है स्पीकर कौन है, मिस्टर ओम बिरला, एंड हेयर आपको ये पता ही है प्रेसिडेंट मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिसाइडिंग हेड इज द वाइस
president who is in called, Rajya Sabha. and he is the ex officio chairman. Matlab, the one who is the vice president of India is supposed to be the chairman of the Rajya Sabha. yes. Rajya Sabha. या ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखो सर ये ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या होता है? क्या बताइए, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिशियो चेयरमैन? एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वन वुड बी द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आल्सो। ओके सर, ओके सर। क्लियर है? ओके, then we have the tenure. You know, Lok Sabha's tenure is 5 years. It can be dissolved before it or after that also. Okay, but Yes, sir. Rajya Sabha is one of the permanent house of India, and all its members remain for 6 years as the member of the Rajya Sabha. And from this point of view, Rajya Sabha's tenure is 6 years. However, every 2 years, its one-third members takes retirement. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. This is all about, and nothing is more important. Then come to the, yeah, ये आपको पता ही है. It starts from we the people of India. Clear है? Yes, sir. It personifies the Indian people. मैंने आपको बता ही दिया which two term have been added by 1976 amendment, that is 46th Sir. amendment. Yes, बेटे. Sir, why extra these socialist and secular words are added in our constitution? ऐसा माना गया था कि एक्चुअली देयर वर एक्सेप्ट हिंदूज ऑल आर माइनॉरिटीज इन द कंट्री। तो उस टाइम पर लगा होगा ऐसा, मतलब गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, गवर्नमेंट को लगा होगा कि माइनॉरिटीज इन इंडिया आर फीलिंग इनसिक्योर देमसेल्फ, सो टू गिव देम अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये जो टर्म है सेक्युलर, वेयर इन which says and emphasizes that all the religions should be treated equally or will be treated equally now onward on the part of the government. Sir, but in our Indian constitution, in article sir 15 to 18, sir, we have mentioned the right to equality. Sir, what is the need of this? Right to equality, but yes, yeah, you are right, but there is an exceptions कि जो right of minorities हैं, they have been given some special provisions, even the reservations have been given to some of the castes, some of the seats even have been reserved for the Lok Sabha also, and you please note it down, for 84 seats meant for the SCs and 47 seats currently meant for the STs, and 131 altogether. These out of 543, that is 412 meant for the general candidate. आप Yes, sir. नोट करिए, 412 meant for the general candidates, and SCs it is 84, STs it is 47 out of 543. क्लियर है? इसका तो क्वेश्चन भी आ चुका है एनटीएससी में पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी मैं बता रहा हूँ, ये कब से हुआ है, ये जो सीट्स है इंक्रीज हो गई है फर्स्ट मीन सितंबर 2012 ऑनवर्ड। ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ सितंबर 2012। क्लियर है? एनसीईआरटी के डेटा है ये। नाउ डेमोक्रेटिक राइट्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपको, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ बैकग्राउंड ओनली, नो आई एम नॉट एम्फसाइजिंग एनीवन एल्स, बट यस देयर आर Studies na in NCRT, the case studies which are given. यस बेटे। These are the case studies na, the Guantanamo Bay and the यस यस Yes, sir. सऊदी अरेबिया। Nanu, I'm taking class right now. Can I speak to you later? Hello. Okay, okay. Yes, please. Yes, better. Guantanamo. Yes, sir. It's a prison in Guantanamo Bay, wherein around 600 people, those who were arrested all over the world by the American, you know, Twin sisters. yeah, द गवर्नमेंट। they were in prison. Twin sister and headquarter. Yeah,
and there was related to the New York attack on 11 September 2001. ठीक है बेटे? Now, Yes, sir. Amnesty International ये क्या है? कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ये पता होना Yes, sir. चाहिए। पूछा गया. International Organization for Human Rights. यस, एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटे, जो पूरे वर्ल्ड में इस बात पर खास अपनी नजर रखता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन, देन इट अपोजेस एंड देन इट रेक्टिफाइज, ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स नॉट टू डू सो। क्लियर? देन Yes, sir. आपको थोड़ा सा पढ़ लेना सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरेबिया। उसमें क्या जिस जिस एक होता है ना वुमेन, Yes, sir. There the king is Sir, the women are not allowed to vote. बिल्कुल, and the the king. testimony of a woman in Saudi Arabia is equal to that of two men. Yes, sir. क्लियर? ये आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है। नाउ व्हाट हैपेंड टू अल्बेनियन फैमिली टाउन इन कोसोवो? कोसोवो इज द पार्ट ऑफ which erstwhile country? Yugoslavia. 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 Right, right, right. What happened there in April 99? This is a case study of Hoxha Batisa and is it her husband, right? Yes, sir. Yes, And sir. Her husband was dead shot by the 3 bullets. was shoot dead thrice, yes, in the chest and because they were Albanians. yeah. So this was the incident because of which Yugoslavia split into 6 independent countries, and now it is no more. Because of the narrow-minded Serb nationalists, it happened, which was called as Milosevic. Pronunciations अगर हम करेंगे इसको सेविक नहीं बोलेंगे, इसको सेविच बोलेंगे. And he wanted the Serbs to rule over the country, and Albanians should leave the country or accept the dominance of the Serbs. And that is why he did this. And sir, only Kosovo Albanians were in majority. Yes. Sir, Yes, Betty, please. sir. Now what is the current context of Yugoslavia? What is the Current context of Yugoslavia. What is the situation there? अभी यूगोस्लाविया है ही नहीं बेटे. Sir, it is divided. It has been split into 6 independent countries. Okay, sir. आपने सुना है ना? क्रोएशिया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. one of the Yes, sir. one of the famous tennis player. Yes, sir. क्या नाम है? बोलो. Sir, Croatia is also a Balkan state. Who is the number one tennis में, lawn tennis man? Roger. Djokovic? No. Djokovic? Novak Djokovic. It's सर्बिया से Serbia, Herzegovina, Montenegro, and this Kosovo and Albania. 6 independent countries हैं हम. Herzegovina. Sir, briefly. Herzegovina. Croatia and Serbia are the famous ones. Yes, sir. क्योंकि उनका स्पोर्ट्स में नाम है ना, इसलिए वो दे आर नोन वेल. आप सर अल्बानिया भी है तो सर अल्बानिया यहीं से आया ना, अल्बानियन से. हर्जिगोविना, सर्बिया, क्रोएशिया, मोंटेनिग्रो एंड 2 मे बी आपने क्या बोला? सर अल्बानिया. अल्बेनिया एंड 1 मोर. यहीं 6 से आया 1. ना अल्बानिया भी, अल्बानियन से ही आया होगा ना. हाँ बिल्कुल बेटे, बिल्कुल अल्बेनिया. सर शायद से मैसेडोनिया भी है. मैसिडोनिया, यू आर राइट, करेक्ट, गुड. यस. नाउ व्हाट आर राइट्स? देखो बेटे, यहाँ पर एक रेड एंड 1 इन ब्लैक. Rights are claims of a person over the fellow beings, over the society, and over the government. But जब आप पूरा एनालिसिस करते हो तो उसकी डेफिनेशन, जो प्रिस्क्राइब डेफिनेशन है वो ये है जो ब्रैकेट में दी हुई है. एक्चुअली राइट्स वो है जो रीजनेबल क्लेम्स है, नॉट ऑल द क्लेम्स. इज दैट क्लियर? तो इसलिए Yes, sir. Yes, sir. The reasonable claims. the definition which is given in the red is not authentic one. The authentic one is the rights which are reasonable. अगर मैं आपको बोलूं कि या आप बोलो अननेसेसरी कि नहीं सर अभी इसी टाइम आप मेरे से मिलो, और मतलब हाउ कैन इट इज पॉसिबल कमिंग ऑनलाइन? इट्स नॉट रीजनेबल क्लेम. या
एक बच्चा अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स पे प्रेशर बनाता है कि मुझे तो ऑस्ट्रेलिया जाना है पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए, बट द फैमिली कैन नॉट अफोर्ड टू इट, so it's not a reasonable claim. The claims are, I mean, which are reasonable of persons recognized by the society. आपने, can you in the Indian society, is it possible that we, मुझे नहीं बोलना चाहिए, हम अपने कपड़े सारे उतार कर घूमे, is it reasonable? Can it be recognized by the society? No. No, No, sir. No, sir. This is against the human rights. cannot be. आप देखो सब्जी वाला आता है, मदर्स हमारी जो सब्जियां लेती हैं वो बोलते हैं अरे भैया 2 मिर्च भी डाल दो, थोड़ा सा धनिया भी दे दो, इज इट रीजनेबल? नो सर। No, sir. इज इट, कैन इट बी रिकॉग्नाइज्ड? नो। वैसे तो बहुत सारे राइट्स हैं, इंडियंस के सबसे ज्यादा राइट्स हैं, और ये हमारी मदर्स का राइट्स है कि वो सब्जी लेते वक्त बहुत सारी चीजें ऐसी मांग लेती हैं। In every house it is going on almost. So rights are reasonable claims of person recognized by the society and sanctioned by the law. And you know, our fundamental rights are sanctioned by the law. They are fundamental in the sense that they can be Recognized by the society. yes, and they are judiciable. अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे से छीनता है तो हम उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, वी कैन गेट देम बैक, so they can be claimable, they are claimable. Now 6 fundamental rights we have, उसमें से थोड़ा सा मैंने बताया है आपको राइट टू फ्रीडम के बारे में, इट्स ए क्लस्टर्स ऑफ 6 freedoms, ये पूछा जा सकता है which fundamental right is the cluster of known as the clusters of 6 freedoms and which are these, ये freedoms है वैसे तो, लेकिन क्वेश्चन यही इससे बन रहा है, प्लस इसी में आप ये भी देखोगे कि what does Indian Constitution say on the life of a personal liberty, or which of the following statement is true or associated with the personal life or personal liberty of a person or an individual as per the Indian Constitution. तो आप देख सकते हो ये 3 राइट है हमारे. A person who is arrested by the police and detained in custody will have to be informed of the reason. उसको किस कारण से आपने उसको कस्टडी में रखा है, अरेस्ट किया है, उसको बताना जरूरी है अरेस्ट करने से पहले. इसके अलावा सेकेंडली, द वन हु हैज बीन अरेस्टेड to be produced before the nearest magistrate within the 24 hours of the arrest. 24 घंटे के अंदर अंदर उसको अरेस्ट करके और मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेशी करना उसकी बहुत जरूरी है. अगर ऐसा नहीं हुआ then police will be at fault. Sir. Yes, बेटे. Sir, if there is any case that there is a person who is arrested in the 12 or 1 in night, and that another day is a holiday. So sir, after 24 hours, there would be no availability of any magistrates because of the holidays or festivals. So sir, this is the what will be done, sir? Yeah, if there is a gazetted holiday declared by the government of India, in that case it is not justiciable, otherwise it is. Okay, sir. So that can also become a reasonable excuse from the police also. उस टाइम देखो, पुलिस आपको टॉर्चर नहीं कर सकती है, एक सिंगल स्लैब भी वो नहीं लगा सकती है पुलिस. मैं आपको ये बता रहा हूँ, पुलिस डू नॉट हैव दिस राइट टू इवन पुट अ सिंगल स्लैब until and unless it is directed by the court. वो कहते हैं ना रिमांड पे भेजा है उसको for 2 days, 3 days or 14 days or 70 days whatever. Other than this, police doesn't have this right. तब तक जब तक वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होता, जब तक पुलिस के लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं आते, no one can do that. So such a person has the right to consult a lawyer also and also engage a lawyer for his defense. Is that clear? Yes sir. Yes sir. ये किसके राइट है? द पर्सन हु इज अरेस्टेड बाय द पुलिस. क्लियर है? Yes sir. अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा था आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. हाउ मेनी राइट्स वी हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? ट्रैफिकिंग, डू यू नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग? Yes sir. Human Yes trafficking. sir. Yes. These are small children, women.
then bonded labor, and then Sir, Begar system. yes, child labor. The begar, child labor, and also the human trafficking. These three comes under right against exploitation. So these three evils are declared illegal by the Indian Constitution following this right. Clear है? Am I audible, Betty? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir, you are clearly audible. Then last is right to constitutional remedies. So this is the fundamental. This is the right of the fundamental right. ऐसा करके कुछ बोला होगा. Sir, it protects the other rights. Yes. Yes. Yes, sir, it is a safeguard of other rights. The right to constitutional remedies was called as the heart and the As the soul. heart and soul of the Indian Constitution. Yes, sir. ठीक है बेटे, ये आप ध्यान रखोगे सारा. Just is okay. Now अब इसमें से आप एक है ह्यूमन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. आपको पता है ना उसका कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में उसका वो कैसे होता है? डू यू नो? No, sir. सर 8th क्लास में था. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. सर ये तो एमनेस्टी नो सर. नो, ये इंडिया के लिए काम करता है बेटे, NHRC. सर लास्ट ईयर में शायद बुक में था ये, सर 9th क्लास में. Sir, set up in 1993. या यू आर राइट. इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. और appointed by the president. Yes, sir. Sir, it is not mandatory for the government to listen the advices of NHRC. Yes, yes, yes. You are right. सर NHRC का 6th चैप्टर में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, हाईलाइटेड पैराग्राफ. आप उसको पढ़ सकते हो अच्छे से, वो आपको पता Yes, sir. थोड़ा आइडिया लग जाएगा. ठीक है बेटे. Yes, sir. 9th क्लास की बुक में लास्ट चैप्टर में दे रखा है सर. अभी अब जहाँ पर ये सारा फिनिश हो गया, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको. जो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ये आपको पता है ना वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो आपको मैं फटाफट, क्योंकि अभी टाइम कम है और मैंने मेरा ये टारगेट है कि आज मैंने आपको 9th का पूरा ये कराना है. ठीक है. देखो इंडिया में आपको पता है ना इलेक्शन कैंपेनिंग होती है. फॉर हाउ मेनी डेज इट इज? फॉर 2 वीक्स. 14. Sir, 2 लिख लो. weeks. 14 days, sir. 14 डेज और 2 वीक्स ये ऑफिशियल पीरियड होता है. Yes, sir. Cannot last more 2 weeks. 2 weeks, right? And then EPIC, you know? EPIC. Yes, sir. Epic. Yes, sir. Sir, election card. Election photo identity card. Election photo identity card, yes. लिख लोगे फुल फॉर्म? Yes, sir.
Then EVM. What is EVM? ये आपको पता है? voting Electronic Electronic voting voting electronic machine. voting machine. ओके, आपको ये पता है बैलेट पेपर क्या होता ये है? सर पहले बैलेट पेपर इस्तेमाल होता था सर वोटिंग के Yes लिए, sir, फिर उसके yes. बाद ईवीएम आ गई सर. यस सर, जब मशीन नहीं आई थी. फॉर ओके टेक्नोलाइजेशन ऑफ. ओके, देन आपको पता है बाई इलेक्शन. Yes sir, Sir, when the after a after death Yes. of Yes. after a death of any. After death of ओके, डू यू नो जनरल इलेक्शन? Yes sir, which Yes, happens so the after a date Yes, certain sir. time of took period, for after example every That 5 is years. after every every 5 5 years years. it is done. ओके ओके, सर मिड टर्म इलेक्शंस भी होते यस, डू यू नो मिड टर्म इलेक्शन? No sir. कई बार ना लोकसभा का टर्म हैं. सर लोकसभा गेट्स रिजॉल्व्ड. जैसे इंडिया में, मैं इसको एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको. 1996 में मिस्टर वाजपेयी then became the president, sorry, prime minister, Mr. वाजपेयी. वाजपेयी और वाजपेयी, it is B ना. ये तो बहुत कम समय के लिए बने थे ना. Just for 13 days first. Yes sir. 13 days, then later 13 months, Then he completed 5 years. about 4, yeah, more than, मतलब about 4 years, or 4 something. अब बोल सकते हो about 5 years again. Atal Bihari Vajpayee. Yeah. क्लियर है? तो दिस इज व्हाट, ये आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा आपको प्रोसीजर पता है इंडियन इलेक्शंस का? Yes sir. क्या है? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले सर wards. है वो बहुत सारे इलेक्शन The making of wards is done. डिवाइड किया The जाता है. land is divided into so many wards, and each ward will be having a. मेकिंग ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. Yes sir. ठीक है. एंड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी इलेक्टेड? Sir, one. So only One is one. elected. सर ओनली वन. ओनली Sir, some are reserved constituencies. For females and for SC and STs. Sir, females के लिए नहीं है, for only for SCs and STs. Yes sir, Sorry. females के लिए 1/3 है sir, local bodies bodies में के लिए है. only. Yes, sir. Local 84 seats. Yes, sir. 84 seats for SCs and 47 And for 47 STs, as seats per for 1st STs. September 2012. 1/3 seats in आर local रिजर्व फॉर वुमेन. गवर्निंग बॉडीज. आप समझते हो लोकल गवर्निंग बॉडीज? And Yes, sir. panchayat. Municipalities and panchayatis. Yes sir, 1/3 for females. Clear? But a bill is pending in the Lok Sabha or For in 10 years for getting a reservation for women. Yes sir. more than a decade, right? इसके अलावा आपको ये पता है कि इंडिया में सबसे पहले मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रल ये फॉलो करते हैं ना, मैंने बताया था अभी आपको. उसके बाद मेकिंग ऑफ वोटर्स लिस्ट. Voters list. Electoral वोटर्स लिस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या बोला था अभी? इलेक्टोरल Electoral list. roll. रोल. Sorry, roll. Electoral roll. क्या होता है इसमें? एडिशन और डिलीशन ऑफ Of the members who are voting. Of those the, are visible voters, their names are added, Yes, sir. Constituency. who have died or migrated, or migrated because of marriage. Girls are migrated to some other places, and so some older members have put to death or died natural death. तो उसके नाम हटा दिए जाते हैं. ठीक है. उसके बाद क्या होता है? नॉमिनेशन. नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. यस. From each ward. और यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. आपको पता है नॉमिनेशन में क्या होता है? डिक्लेरेशन. Sir, affidavit. declaration of the members who will be standing in the elections by the party. Sir, he shall give the number of assets and liabilities in his family, serious criminal cases pending against him, and his education qualification.
and it's money which he had, and economic declaration power. of assets also in our affidavit. बिल्कुल ठीक है. So is it required any educational qualifications for the leaders to for the leaders in India? Yes, sir, it is required to have a assets. No, it is not required. It is just like that Sachin Tendulkar, who is just 10th passed, what he required is the skills to play better cricket. And likewise, Ye- the person who understands the people's emotions and is ready to serve them any time. I mean, the kind of skills are required just, and not an MA or BA or whatever. It is not Yes, required. sir, experience is required in Yeah, a, yeah. in being a leader. Yes, it gives us an opportunity to elect the candidates, those who are really educated, because there is uh, really a difference in the one who is educated and the one who is not educated, the skills that they have. अगर आप सोचने समझने की शक्ति की बात भी करोगे तो the one who is educated can have better decisions and better thinking. Uh, you know, Sir, yeah. sir, there should be, I think, sir, I think that in the case of election or nomination of the candidates, sir, there should be a simple aptitude and decision making test for Very the candidates who are coming. वेरी गुड. और उनके उनकी जो क्या बोलते हैं, Yes, sir. उनकी emotion, डिसीजन मेकिंग पावर, उनकी एप्टीट्यूड को जिससे समझा जा सके कि ही इज एबल टू बिकम अ लीडर. उनकी उनके उनके जो इश्यूज हैं उनको रेज करना और उनको उनके साथ इंटरेक्ट करना, इंटरेस्ट दिखाना. यस सर. बिल्कुल. इसके अलावा नॉमिनेशन के बाद फिर क्या आएगा बेटे? सर कैंपेनिंग. यस. Manifesto. Sir, electoral manifesto is provided by the party to the people. But there are certain rules also for campaigning. Likewise, in Lok That Sabha campaigning Some cannot be model तो done code in पब्लिक of conduct. प्लेसेस में नहीं हम रैल Some, the model code there of conduct is given by the some model electoral code of conduct. commission, and it also include that the no of the campaigning is done on the religious places and no of the money is mode is Country used. money. No resources. Even the ruling party cannot use No any government resources are used. गवर्नमेंट रिसोर्सेज. एंड इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, ये कैंपेनिंग के बाद क्या No होता है? campaigning on religious places. वोटिंग और पोलिंग जिसको हम बोलते हैं. sir, no use of governmental resources for campaigning. ओके. दिस इज द कोड ऑफ कंडक्ट which is issued by the election commission of India. Sir, in Lok Sabha elections, the parties can't use more than 25 lakh rupees for campaigning. ओके, वेरी गुड. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इलेक्शन प्रोसीजर इन इंडिया. Sir, there will be no campaigning before 1 day of election. बिल्कुल ठीक है. Yeah, yes, sir. क्लियर है. उसके बाद Yes, sir. इसमें Election. Yes, sir. Electoral officer is also appointed to for the free and fair election polling. इलेक्शंस इन इंडिया. Election commissioner. या नहीं सर, एक ऑफिसर भी डिपोट किया जाता है. यस यस. Sir, वो तो state के लिए होता है. यस यस. स्टेट इलेक्शंस भी होते हैं और इंडिया में इलेक्शन कमीशन पूरे कंट्री के लिए भी है और स्टेट्स के लिए भी. ठीक है. तो ये सारा हो गया आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. अब कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है तो उसमें आपको आपको ये भी पता है कि सीएम की पावर, सॉरी पीएम की पावर क्या है और प्रेसिडेंट की पावर क्या है. बहुत जनरल सा है, वो क्लियर है. हु इज द नॉमिनल हेड इन इंडिया? सर प्राइम प्रेसिडेंट. सर नॉमिनल तो सर Sir, प्राइम the मिनिस्टर. president. बिल्कुल ठीक सर है. नॉमिनल प्रेसिडेंट है. नॉमिनल प्रेसिडेंट. एंड हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? सर हेड ऑफ सर गवर्नमेंट प्राइम इज प्राइम मिनिस्टर. मिनिस्टर. So Prime Minister. That's the Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर. बिल्कुल ठीक है. एंड yes, as such, there is in the constitution there is no clarification regarding the power of the prime minister. But since he is from the Lok Sabha generally and is elected by the people through their right to vote, and so is accountable to the people, and that is why he is supposed to use all the powers of the Indian president practically, being the head of the government in the Lok Sabha, right? यस सर.
and सर लास्ट में एक वो दे रखा है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन वही है बेटे, लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं ना, जनरली द वन हु इज द लीडर ऑफ द पार्टी, मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा इज called up by the president and asked to form the government, and then he has to prove the confidence, sorry, the major, that he is the popular leader in the Lok Sabha. उसमें वोटिंग वोटिंग होती है एंड देन उसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन. वो कभी भी कौन ला सकता है, जो पार्टी अपोजिशन होती है टू द रूलिंग पार्टी. क्लियर? इसके अलावा इसके फंक्शन Yes, sir. होते हैं सेरिमोनियल. ये आप ध्यान रखना, जितने भी फंक्शन होते हैं सारे सेरिमोनियल The होते हैं. ceremonials, award giving, for example, sir, Padma आपने क्या बताया Bhushan सर is अभी? all are given by the president. लाइक Nominating. सर आपने बताया सर अभी नो Bharat कॉन्फिडेंस में. Ratna, Queen of सर Britain. ठीक है बेटे, ये से एसोसिएटेड क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको दे दिया है. सर Yes. सर फाइनल डिसीजन जो रहता है वो किसके पास होता है, नॉमिनल हेड के पास या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट के पास? Head of the government. गवर्नमेंट के पास. ओके सर. सर अभी एक बच्चा कुछ पूछ रहा था, बोलो बेटे. सर आप बताया था नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर सर क्या होता है वो? किसने पे नो कॉन्फिडेंस मोशन? यस सर The रिपीट no कर दीजिए. confidence bill is, yes, sir, it is given by all the members of the Lok Sabha and when they oppose the PM. देखो, जब हम बात करते हैं कि विच हाउस इज मोर पावरफुल और हाउ लोकसभा कंट्रोल्स द गवर्नमेंट, तो उसमें क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी ऑटोक्रेसी को खत्म करने के लिए एक पावर होती है, जो रूलिंग पार्टी के अपोजिशन में जो पार्टीज होती है उनके पास. वो कभी भी एक रेजोल्यूशन लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को उस पर जवाब देना होता है. और उस जवाब के बाद, उसके क्लैरिफिकेशन के बाद, उसकी एक स्पीच होती है जो जिसमें वो क्लैरिफाई करता है अपने बारे में, अपनी गवर्नमेंट के बारे में, और अपना विजन बिल्कुल क्लैरिफाई करता है गवर्नमेंट का. उसके बाद वोटिंग होती है, जितने भी मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और उसमें ये होता है कि अगर मेजोरिटी, जो 2/3 मेजोरिटी है, अगर वो पार्टी के फेवर में है, जो रूलिंग पार्टी है, तो ही वो पावर में टिके रहेंगे, अदरवाइज दे हैव टू गिव रिजाइन. मतलब हु गिव रिजाइन? प्राइम मिनिस्टर. एंड the resignation of the prime minister is considered the resign of the entire government. और इस तरह से पावर से बाहर हो जाती है गवर्नमेंट. Sir, As happened in India in 1996, when BJP's government in coalition was there, headed by Atal Bihari Vajpayee. Within 13 days it happened, and second time it happened after 13 months. Clear, bete? sir, Yes, sir. sir, you said that कि आफ्टर द, जैसे प्रेसिडेंट को अपोज करने वाले सर जो अपोजिशंस होते हैं सर, वो 2/3 में जब करेंगे तभी प्रेसिडेंट का होगा, या फिर 2/3 ऑफ द होल लोकसभा मेंबर्स, या फिर अपोजिशन ओनली 2/3? No. 2/3 of the present member in Lok Sabha मैंने बोला है. सर अगर ऐसा होगा कि सर 2/3 ही पूरी पूरी मेजोरिटी है सर, इतनी ज्यादा उसको है सर, तब तो फिर हो ही नहीं पाएगा सर अब ये प्रेसिडेंट. जरूरी नहीं है. देखो, अभी मैं आपको बोलूं कि आप वोट दो मेरे लिए, हाउ इफेक्टिव आई एम, बट रिमेन कॉन्फिडेंशियल. आप ये मुझे नहीं बताओगे कि हुमन हैज कास्टेड वोट इन माय फेवर. So this is the confidential voting pattern in India, and so is followed in Lok Sabha also, wherein no one knows whom you have casted, right? तो हो सकता है अटल बिहारी वाजपेयी की जो, मतलब सामने से बोलते हो कि वी आर इन योर फेवर, अंदर से उन्होंने उसके फेवर में वोट ना किया हो. यस सर. तो ये जो पार्टी सर अपोजिशन होती है सर करती क्यों है ऐसा वो, जो पार्टी अपोजिशन में होती है? वो करते क्यों है बेटे? पार्टी को पावर से गिराने के लिए कुछ भी कर सकता है. अपॉर्चुनिस्ट होती है पॉलिटिक्स. वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हमेशा. मोदी के लिए कभी नहीं आया नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि ही इज, दो दिस इज आल्सो अ कोलिजन गवर्नमेंट, बट स्टिल बीजेपी इज हैविंग मोर देन द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स विद इट. अच्छा मुझे बताओ फटाफट, एनडीए और यूपी आपको पता है? Yes, सर sir. एनडीए, Yes, Alliance sir. is the National National Democratic Alliance and the and United Progressive United Alliance. United Progressive Progressive Alliance. Alliance. Sir एनडीए has the BJP and other And parties, UP has the common leader Congress. Congress. Do we have any right front? Do we have any right front? Sir, there is no left and right front in India. Okay, you are right. So should I Indian believe Communist Party of India as left front. these are what? Got it?
Yes, sir. Alliance. Political parties. No. Alliance. Alliance. It's a Alliance. Sir, political alliance alliance. These are Alliance of the. political parties. coalition government. This is headed by BJP, and this is headed by INC. INC. INC, Indian National Congress. and this is headed by CPI, Communist Party of India, It's a Marxist. CPI. CPI. yes, CPI. CPIM, सर CPI. इसमें एम लगाना नेसेसरी होता है? हाँ जी बेटी, सर जैसे हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिखते हैं तो सर उसमें सीपीआईएम भी लिखते हैं, एम का मतलब मार्क्सिस्ट होता है, तो सर वो एम लगाना नेसेसरी होता है? वो वो अलग पार्टी सेपरेट होती है। पार्टी है. CPI, CPI and CPIM both are different parties. सब वो 1964 में सेपरेट हो गई है। यस सर, ये 1925 में सीपीआई फॉर्म हुई थी, उसके बाद 1964 में स्प्लिट हो गए थे। Okay, good, very good. ठीक है, समझ आ गया बेटी अब आपको? यस सर। सर यस सर। Now, electoral politics is clear. Yes, sir. It is clear, sir. यस सर, इट इज यस क्लियर। सर। Democracy, why democracy is also clear. Constitutional Yes, amendment sir. is also clear. यस सर। Rights are also clear. Yes, sir. यस सर सर। द वन इज Everything is क्लियर। clear from 9. यस सर। 9 political science is clear. Yes, sir. We have revised the whole line. Now come to your consumer awareness. मैं अभी जनरल क्वेश्चन पूछूंगा, आपको पता है, मुझे पता है. सर आज ही कराओगे आप कंज्यूमर One वाला भी? बेटे क्या बोल रहे हो? सर आप आज ही कराओगे उसे भी? किसमें से? सर कंज्यूमर वाला भी? कंज्यूमर अवेयरनेस अभी डिस्कस कर लेते हैं. उसमें है ही कितने क्वेश्चन है? कुछ भी नहीं है उसमें. ओके सर। सर पीपीटी से ही रिवाइज करके बना रखी थी। किसने बनाई हुई है? सर मैंने बनाई हुई है। कैन यू शेयर? यस आई कैन सर। No, first you would be sending on my WhatsApp. Please note my number in case if you have any doubt. Okay, sir. I'm giving you the WhatsApp number because one of the student asked me yesterday. Yes, sir. सर प्लीज राइट इट इन चैट। Okay. यस सर, अदरवाइज इट वुड बी लीक्ड इन पब्लिक। सर वो वहां पे लिखा आ रहा है सर, वो आपके स्क्रीन पे लिखा रहा है। तो आप लिख लो ना उसको. नहीं सर, और एक्चुअली चैट बॉक्स में लिख दीजिए सर, क्योंकि फिर ये रिकॉर्ड हो जाएगा. ये ओ, रिकॉर्ड अब तो हो चुका। हो चुका. Yes, sir. अब कोई ये सब तो हो चुका रिकॉर्ड। Not an issue. So have you सर noticed वैसे this? यस सर. सर वैसे भी सर रिकॉर्डेड वीडियो सर केल्विन के स्टूडेंट्स ही देखते हैं. Yes, yes, yes. सर एक बार वापस से लिख दीजिए। तो आप पहले मुझे भेजोगे. आई विल सी हाउ ऑथेंटिक इट इज एंड देन वो डिस्कस. बाकी मैं आपको बता रहा हूँ. ओके सर. ओके सर, थैंक यू सर। Who is a consumer? Haru, who is purchasing the good? No. Purchasing the goods and paying for it. एंड पेइंग। देखो, जब तक आप उसको पैसे देके नहीं खरीदोगे, कंज्यूम नहीं करोगे, तो तभी तो कंज्यूमर कहलाओगे. अदरवाइज तो आप बायर हैं. यस सर। एंड हु इज द प्रोड्यूसर? Sir, one who makes the good. गुड. मैन्युफैक्चर है. प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट टू द कंज्यूमर। मार्केट. यस, बिल्कुल ठीक है. एंड डू यू नो कोपरा? यस सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था इंडिया में? 1886। 1886. नो 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 नो. 1986. Okay. And when this act was passed, on which day particularly? 24 दिसंबर। Very good. ये आपको याद है. So we celebrate this day as consumer day ना? National, yeah, it is a national consumer day in India. तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है बेटे? 24 December. Why? Because Consumer Protection Act was passed by the Indian Parliament in 1986 on 24th of December. And so this day in India is celebrated as the National Consumer Day. Clear है? Yes, sir. अब आपको हॉलमार्क का पता होना चाहिए. यस सर, एजी मार्क, हॉल मार्क, ISI हॉलमार्क। एजी मार्क, और एक होता है AGI. क्या होता है? एगमार्क. जो भी होता है, इसको मैं कर देता आई नहीं हूँ. होता इसमें।
ठीक है। एग मार्क meant फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स, आप देख सकते हो, इसके नाम से ही पता चल रहा है। और ISI मतलब बोले तो इंडियन इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है। इंडियन। नो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस गुड्स जनरली। और हॉलमार्क meant फॉर, सर प्रीशियस आइटम्स। सर हाँ जी, ज्वेलरी। क्लियर है बेटे। यस सर। इसके सर अलावा बट आर दे Yes, सर? sir. अच्छा, इसमें एक होता है कंज्यूमर कोर्स, और कितने वैल्यू के केसेस कहां पर जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सर व्हाट इज सॉरी, कंज्यूमर कोर्स? कंज्यूमर कोर्ट है। कंज्यूमर कोर्स और रिड्रेसल एजेंसीज। Yes, sir. कंज्यूमर Any consumer who finds that he has been exploited can go to consumer court to claim it. कितने कितने तक का उसमें बेटे, ये भी तो ये आपको पता होना चाहिए ना। देखो, एक होता है 1 करोड़ और उससे अबव, एक होता है 1 से 20 लाख तक, एक होता है 20 लाख से नीचे। नहीं पता? No, sir. नो सर। नो ओके। सर। आप लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं किया? नो सर, मेरे अभी स्कूल में तो नहीं सर है। ये चैप्टर कराया यस ही सर, नहीं करा सर। है, कंज्यूमर राइट्स का करा है। प्रोजेक्ट क्या क्या है, फिर उसके बाद सर करने के बाद मेरी बात नहीं आई। हम्म। सर, सर in हाँ बेटे, some student or schools it is not done, this chapter is not done sir. हाँ वो जनरली कराते नहीं है ना, क्योंकि इट्स ए पार्ट ऑफ, लिख लो बेटे, मैं बता रहा हूँ आपको। जो इंडिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट होते हैं ना, कंज्यूमर इंडस्ट्रियल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो Yes sir, 20 there is a लाख तक code. की क्लेम को पता है आप लोगों को? आप यस झूठ सर, क्यों? अभी पीपीटी में देखा मैंने दोबारा से, तो वहां पे 20 लाख मैंने मेंशन किया है। एंड जो स्टेट लेवल होते हैं वो सर 1 करोड़ तक कर सकते हैं। 20 लाख से लेकर, सर ये क्या है सर, दिस करेंसी किसके लिमिट्स है सर? ये लिमिट्स है। जैसे सपोज करो, आपने कोई चीज खरीदी और वो 20 लाख उसकी कीमत थी, आपको कोई नुकसान हुआ, आप कोई क्लेम करना चाहते हैं किसी कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जा सकते हैं, क्योंकि आपका केस इतने नुकसान का है, 20 लाख। ठीक है। Okay sir. Sir, it means the product should be of 20 lakhs or above. अप टू अप टू 20 लाख, मैं इससे क्लैरिफाई कर देता हूँ थोड़ा सा। अप टू 20, क्लियर है? और सर नेशनल लेवल में अबव एक्सीडिंग 1 करोड़ है। हाँ जी बेटे। सर सर नेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे 1 एक्सीडिंग करोड़ 1 से ऊपर। लिमिट। और नेशनल रिड्रेसल एजेंसीज भी होती हैं फिर उसके बाद, नेशनल लेवल पे 1 मोर, करोड़ से ऊपर। या क्लियर है? यस यस सर। सर। Yes, यस। sir. इसके अलावा आप, एक है यहाँ पर RTI, राइट टू राइट टू इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एक्ट। 2005। अक्टूबर 2005। यस। क्लियर है? इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पॉपुलरली नोन है, RTI। RTI। RTI. आरटीआई। इट इज ऑल्सो नोन एज द कंज्यूमर्स गेटवे। वॉच डॉग्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। वॉचडॉग्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। यस सर। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. यस सर। ये सब आपको पता होना चाहिए बेटे, ठीक है। जनरली यही है NTSC से रिलेटेड क्वेश्चंस। और इसमें आप
Yes. कुछ कुछ जनरल क्वेश्चन जैसे कैसे हो सकते हैं, सपोज आपने एक सिलेंडर खरीदा, आपको बोला जाता है कि इसके साथ में आपको कुछ और भी ले लो, जो भी आइटम होते हैं, मुझे इतना नहीं पता है किचन के जो ये सब है। तो नो वन कैन कंपेल यू फॉलोइंग योर राइट्स एज अ कंज्यूमर। कैन यू बी कंपेल देन? Yes, sir. Yes. ओके, तो इन दैट केस आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे सपोज करो आप या what do you mean by right to seek redressal? Sir, if we have, if any consumer has realized that he or she has been exploited और उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो वो जो है कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग कर। अगर हम कंज्यूमर राइट्स की बात करें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि जो हमारे राइट हैं, राइट टू सीक redressal, वो क्या कहता है? इट इज अगेंस्ट द फॉल्टी ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ, और अनफेयर भी कह सकते हो आप इसको। against the consumers. या Sir, there are six basic consumer rights. 6 बेसिक राइट ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाम बताओ सबसे Sir, पहले। right to safety, right to information, right to choose, right to representation, right to redress, right to redressal, and right to consumer education. राइट टू चूज, ठीक है। The right to safety, ओके, the right to information, right to represent, right to और sir right to consumer education भी है, and sir एक right to safety भी है इसमें। इज इट ओके? Yes, Yes sir. sir. नाउ आर यू satisfied with what has been done today? Yes, sir. Yes We are sir. satisfied. Yes, Yes, sir. sir. Completely satisfied sir. Good. Sir, interesting. Yes, sir. We have completed the revision of class 9 as well as the consumer Sir, please rights. So can you now speak we your will solve objective questions of these topics. sir Sir, please now send we will this revise the sir ninth economics. या Yes, sir. तो आप राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोपरा। सर होमवर्क क्वेश्चन आज वाले। यस प्लीज। वैसे तो आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो और मैंने आपको सब कुछ दे ही दिया है, बट स्टिल। Yes, sir. ये सर बना लेंगे। नो सर, आप दे दीजिए सर, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है सर, 3 4। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन दे दूं? Sir, सर long भी सर question. सर एनटीएससी के यस लिए। सर, यस सर, कुछ प्री बोर्ड के लिए सर लॉन्ग क्वेश्चन दे दो सर। सर अभी एनटीएससी के लिए दे दो सर खाली। सर एनटीएससी के लिए दे दो। सर Yes, एनटीएससी है सर, नोट्स काफी है सर। नोट काफी है ना? तो आप yes. क्वेश्चन, ओके ओके ठीक है।
Are you writing, bete? Yes, sir. Yes, sir. We are writing, sir. Clear, Ash? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Should I give you more or enough? Sir, Enough, sir. enough. So सर एंड में अपना नंबर दे दीजिए चैट बॉक्स में. ओके, चैट बॉक्स. अभी मैं स्क्रीन ऑफ कर दूं ना? Yes, sir. कर यस दीजिए, सर. sir. yes, sir. Yes, sir. Got it. लेकिन बेटे एक बात ध्यान रखना. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. मैं इन केस इफ आई एम बिजी, देखो कई बार होता है कि आप कॉल भी करोगे तो आई कैन पिक अप, नो इश्यू. बट आप मुझे अगर इन केस यू आर ऑन योर स्टडी टेबल, यू माइट बी हैविंग एनी डाउट, यू प्लीज सेंड मी ऑन द व्हाट्सएप, राइट? Okay, sir. We will send. ठीक है. एंड देन डेफिनेटली Yes, sir. आई वुड रिप्लाई द मोमेंट आई वुड सी, आई वुड रिप्लाई. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Okay, sir. Thank you, sir. जनरली जो मैं फ्री रहता Thank हूँ, you, sir. मैं एक बात और बता दूँ, जनरली जब मैं फ्री रहता हूँ तो मेरा जो टाइमिंग है वो 8 to 10 ओ क्लॉक के बीच में होता है. Sir, 8 and 10 नाइट के या फिर दिन के? रात में 8 to 9, 8 to 10, सॉरी 8 to 10. Okay, sir. ठीक है. ओके. ओके. Okay. Good evening, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, वेरी sir. गुड. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग. वेरी गुड. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड Sir, इवनिंग. PDF भेज देना सर, मतलब ई साइट्स पे. यस यस प्लीज, आई वुड बी. ओके.